अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल है? तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और नई स्ट्रीम के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। एंड आई नो आई हैव बीन गॉन फॉर अ वाइल ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम कर सकूं। आई वॉज वर्किंग ऑन माई कंपनीज वेबसाइट एंड ऑल्सो ऑन द लॉन्च ऑफ सम ओन SaaS एप्लीकेशंस, तो मैं उन्हीं में बिजी था। और कंपनी तो लॉन्च हो चुकी है, सो या यू गाइस कैन विजिट द वेबसाइट एट vwiselabs.com। ये इसका URL है, मैं इसको दे दूंगा आप लोगों को। सो दिस इज़ द वेबसाइट। आप इसके साथ जो है खेल सकते हैं, ठीक है, और एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी वर्क हमने किया है थ्रू आउट द मंथ्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग ऑन सम अदर SaaS एप्लीकेशंस, तो इंशाल्लाह वो लॉन्च होंगी। सो आई विल बी वेरी हैप्पी to share with you guys. So that was my progress throughout the month and the reason for my absence. तो हाँ, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्टेक्स्ट एंड streaming, I guess. Yes, these were the stream topics. And if I show you, I have this document here, और इसमें आप लोग देख सकते हैं हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे एजेंट क्या होता है, हमारे पास एजेंट कॉन्फ़िगरेशन, हैंड ऑफ टूल्स, और उसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रीमिंग जो थी ये नहीं पढ़ा था, और उसके अलावा हमने कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा। सो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करना होता है। इसको थोड़ा सा हमने टच तो किया था वैसे। उसके अलावा गार्ड रेल्स थे, सो इनपुट और आउटपुट गार्ड रेल्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। सो दैट वाज द प्रोग्रेस सो फार। Let me open the Open AI Agent SDK 00 so that we can work on that। और मैं रेपो में भी पुश करता रहूँगा आफ्टर ईच स्ट्रीम ताकि हम लोगों की जो कोड है वो अपडेट रहे। ओके, इन द एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्ट्रीमिंग। ओके, लेट्स सी कि व्हाट इज स्ट्रीमिंग। ओके, और मैं काफ़ी कुछ भूल गया हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ था थ्रू आउट द 7 days, और उनको दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा, बट आई गेस इतना मुश्किल नहीं होगा। स्ट्रीमिंग लेट्स यू सब्सक्राइब टू अपडेट्स ऑफ द एजेंट run as it proceeds. This can be useful for showing the end user progress updates and partial responses. ठीक है, to stream you can call runner.runStreamed, which will give you a run result streaming. Okay, ये class है। calling result.stream events gives you an async stream of stream events objects. okay, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है which are described below. so हमारे पास क्या हो रहा है, हम ये एक फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, रनर डॉट रन करते थे हम पहले, और ये हमारे पास रनर डॉट रन स्ट्रीम्ड है। इसके अलावा इसका एक और भाई है, रनर डॉट रन सिंक है, आई गेस रन, हाँ रन रन सिंक है। सो उसको मैंने अभी तक नहीं देखा कि रन सिंक और रन स्ट्रीम्ड और जो हम नॉर्मल रन करते हैं इनमें क्या फ़र्क है। विच विल गिव यू अ रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग। ओके, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग देगा हमें ये, ठीक है। इसके सो इसको जब हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे ये हमें देगा रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग कॉलिंग रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में से स्ट्रीम इवेंट्स को लेंगे जो कि इसमें से निकलेगा, एंड दैट विल गिव अस एन एसिंग स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम इवेंट्स ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्क्राइब बिलो। ओके, तो उसमें से फिर हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। सो एक एरे होगा, उसके ऊपर शायद हमें कुछ करना पड़ेगा। raw response events, raw responses stream events are raw events passed directly from the LLM. They are in OpenAI's responses API format, which means each event has a type like response.created, response.output text.delta, etc, and data. These events are useful if you want to stream responses messages to the user as soon as they are generated. For example, this will output the text generated by the LLM token by token. So हमारे पास async IO आ गया, OpenAI.types.responses
वहाँ से इन्होंने लिया है रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, और फिर फॉर फ्रॉम एजेंट्स इन्होंने एजेंट और रनर को ले लिया है। एक मेन का फंक्शन इन्होंने बनाया है जो कि पाइथन में हम डेफिनेशन बोलेंगे जिसको। तो यहाँ पर एजेंट इज इक्वल टू एजेंट की क्लास नेम है जोकर, इंस्ट्रक्टर यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। नाम जोकर क्यों रखा है आई डोंट नो। और रिजल्ट इज इक्वल टू रनर डॉट रन स्ट्रीम्ड। अच्छा, रिजल्ट रन स्ट्रीम्ड हो गया, और उसके अंदर हमने एजेंट पास कर दिया जो कि हमने बनाया है। इनपुट प्लीज टेल मी 5 जोक्स। ओके, वैसे हेल्पफुल असिस्टेंट के बजाय कुछ और आ सकता था, थोड़ा मोर स्पेसिफिक जोक्स। यू आर अ कॉमेडियन कुछ इस तरह से इसको रोल असाइन करते तो ज़्यादा वो हो जाता। खैर, प्लीज़ टेल मी 5 जोक्स, और ये इसका इनपुट चला गया, ये एजेंट है। और इस सिंक हमने लूप चलाया है फॉर इवेंट इन रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स। ओके, इसके अंदर मुझे पता था कोई एरे है या लिस्ट है। इफ इवेंट डॉट टाइप was equal to raw response event and instance event dot data response text delta event। ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ये मुझे स्टडी करना पड़ेगा और भी। प्रिंट इवेंट डॉट डेल्टा एंड इज इक्वल टू जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग एंड फ्लश कर दो डायरेक्टली जो भी रिजल्ट आए। ओके, कोई बात नहीं। ये जो है ये बगैर रिजल्ट को कैश किए या बफर किए बस हमारे पास प्रिंट कर देता है, सो द प्रिंटिंग इज़ क्वाइट फास्ट फॉर दैट। और ये जो है हमारे पास व्हाट इज़ इट फॉर, लेट मी सी। ओके, मैं भूल जाता हूँ बार बार ये। In Python, print prevents it from adding a new line to the end, so the output stays on the same line. Okay, ठीक है, आउटपुट हमारे पास सेम लाइन में रहता है, सो ये उसके लिए है। और फ्लश ट्रू जो है ये हमारे पास बस रिजल्ट को डायरेक्टली प्रिंट करता है विदाउट जस्ट बफरिंग एंड कैशिंग इट फॉर अ लिटिल टाइम। अच्छा, इवेंट डॉट डेटा डॉट डेल्टा async IO। ओके, ओके। सो हमें पहले तो ये चीज़ एक सिंपल से स्टेप में समझनी पड़ेगी कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसको। सो दिस विल बी रिटर्निंग विद सम स्ट्रिंग्स एंड स्टफ। तो अपने यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं, लेट मी जस्ट चेक। और बस गार्ड है, ओके। और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, दैट विल बी स्ट्रीमिंग डॉट पाई। मैं TSX लिखने वाला था लेकिन बच गया मैं। और यहाँ पे RAFC लिखने वाला था लेकिन उससे भी बच गया। ओके, थोड़ी सी आदतें बिगड़ती जा रही हैं फ्रेमवर्क से, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे व्हाट डू वी हैव टू डू इज दैट कि मैं भूल गया हूँ कि क्या करना है हमें। सो हम प्रीवियस जगहों से अपने लिए रेफरेंस लेंगे। क्या हालत हो गई है हमारी। गार्ड रेल टूल हैंड ऑफ। ओके, सो हमारे पास हमें OS लेना है, ठीक है। हमारे पास हमें एजेंट्स लेना है। ओके, ये एक नया कारनामा हो गया है, हमारे पास एजेंट ही इंस्टॉल नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं एक अपना दूसरा चैट खोल लेता हूँ। GPT-5। um, what is the installation command for both
Light LLM and Open AI Agent SDK for Windows। एंड उसके साथ हम ब्राउज सर्च ऑन कर लेते हैं। आई गेस ब्राउज सर्च तो ये खैर करता ही होगा आप, कि नहीं करता, खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा इसमें हम अगर स्टडी मोड ऑन करें, ओके एक ही हो सकता है, चलो स्टडी में शायद ये ऑनलाइन सर्च करे ना। बैड रिस्पॉन्स, वापस करते हैं। ओके ये अच्छा है। पिप इंस्टॉल ओपन एआई एसडीके लाइट एलएलएम। टू आइसोलेट एंड कंसिस्टेंट बेस्ट एनवायरनमेंट, ये अच्छा है। साथ में इस तरह की अच्छी सी वो देनी चाहिए इसको, क्विक वेरिफिकेशन। ओके ओके, इसमें एक इशू आ गया था कुछ दिनों पहले, और वो था पाइथन के उसके साथ वर्जनिंग के साथ ओपन एआई एसडीके में। सो आई होप कि वो रिजॉल्व हो गया हो। लेट्स, ओके एक सेकेंड, वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने एक्टिवेट ही नहीं किया, मैं वो बात ही भूल गया थोड़ी देर में। मेरे पास तो वर्चुअल इन्वायरमेंट है। फॉर कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास ये वाला है। लेट्स जस्ट पुट इट हियर। ओके हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है, और अब हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सो जस्ट अप एरो दबाओ, कमांड आ जाएगी। नाउ इसके इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं, इंस्टॉलेशन होगी उसके बाद हम पाइडेंटिक और डॉट env को भी साथ में इंस्टॉल कर लेंगे। ये कह रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड, देखते हैं कि कितना सेटिस्फाइड हुआ है ये। इफ़ वी ऑलरेडी हैव दीज थिंग्स, लेट्स जस्ट वेरीफाई। लेट्स वेरीफाई द सेटअप। import light llm agents print light llm version और light llm dot version। ओके देखते हैं। वैसे इसको पता है कि कैसे इन ऑब्जेक्ट से गेट करनी है ये चीज़ें। फाइल सिस्टम प्रिंट, नो एट्रीब्यूट, वर्जन कोई नहीं है उसमें। ओके अगर हम एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स जस्ट डिलीट द प्रीवियस इन्वायरमेंट, करप्ट हो गया है शायद, क्योंकि मेरे पास, मुझे लगता है तो सेटअप करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सेटअप है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले तो ये कमांड चलानी है, पाइथन डैश एम वी एन वी स्पेस डॉट ई एन वी एन वी सॉरी। तो पहले पहले तो मैं इसको जो है कमांड प्रॉम्प्ट को किल करता हूँ, क्योंकि एक स्टेल इन्वायरमेंट पड़ा हुआ है इसके अंदर। कंट्रोल जे, न्यू इन्वायरमेंट आ गया हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है। ओ ओ गलत कमांड चल गई। हम्म, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। इससे एक डॉट वी ई एन वी की फ़ाइल बन गई, ठीक है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट का फोल्डर आ गया हमारे पास। अब हम आते हैं, इसको एक्टिवेट करना है तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट में हम हैं। आई होप सो कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में ही हैं।
हाँ, हम कमांड प्रॉम्प्ट में, वैसे पाइथन लिखा हुआ था वहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं हुआ ये। ओके, हो गया। अब इन्वायरमेंट भी एक्टिवेट हो गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यूवी पे भी इंस्टॉल करेंगे। बिकॉज हमारे पास यूवी है, सो वी विल बी यूजिंग दैट, वो अच्छा रहेगा। और अभी हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा होशियारों वाला काम करेंगे कि इसकी एक हम रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल बना लेते हैं, ताकि हमारे पास वो चले। सो पुरानी वाली को मैं डिलीट कर रहा हूँ। और हमारे पास वो हेल्प के लिए अच्छा हो जाएगा। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ requirement file so I do not have to manually store everything again। अभी देखते हैं ये हमें सिखाएगा। पिप इंस्टॉल लाइट एलएलएम वगैरह आ गया। हम्म, नहीं, ये डिफाइन करने को बोल रहा है, ऐसे नहीं करना। इसकी कुछ फ्रीज की फाइल बनती है। ओके, तो ओके, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही रन करते हैं। पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट डॉट टी एस एक्स, ठीक है। तो देखते हैं ये सब इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम एक ये फ़ाइल बना लेंगे, ताकि हमें मैनुअली सब कुछ इंस्टॉल ना करना पड़े। उस ख्वारी से हम बचेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास डॉट ई एन वी, पाइडेंटिक, ये चीज़ें जो हैं ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है। हर एक सेशन मेरा ऐसा होता है कि उसमें मैं फंस जाता हूँ डाउनलोडिंग में या इंस्टॉलेशंस में। सो क्या ही कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। और यू वी पिप इंस्टॉल, हमारे पास पाइडेंटिक, और उसके अलावा उसका भाई आ जाएगा डॉट ई एन वी। ओके, तो ये दोनों भी आ गए। अच्छा जी, ये भी हो गया, डॉट इन भी हो गया। नाउ डू वी हैव समथिंग लेफ्ट, जस्ट कंट्रोल शिफ्ट पी, और हमारा जो है रिलोड विंडो कर लेते हैं, ताकि देखें हम कि सब कुछ इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये सब कुछ ग्रीन ग्रीन आना चाहिए, एल्स इट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। हो जाओ सिम सिम, प्लीज़। ओके, वेट करते हैं।
अपीयर हो जाओ भाई, रंग अपीयर नहीं हो रहे इसके, सब लोड हो रहा है। एक तो ये भी इंजन की तरह है भाई, गर्म होने में टाइम लगता है इसका। ठंडा चलाओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा इसका। खैर तब तक हम कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये नया सेशन खुला है, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम न्यू चैट ओपन कर लेते हैं। वी विल सेलेक्ट द स्टडी मोड, स्टडी एंड लर्न। आई एम learning Open AI Agent SDK. I am trying to learn streaming. But before that, I want to learn differences between run, run sync and run stream and the runner. Okay, and I want you to link everything together. If they don't link, create separate examples. I want you to go step by step with each explanations like a link, which function derives what and returns what, and what do we have to do in order to achieve a result. Okay, kind of doing a prompt engineering stuff. Give me real and professional real life situation related, situation oriented examples, reducing jargon. ओके और क्या करना चाहिए, काइंडली गो ऑनलाइन फॉर द लेटेस्ट results, so my version Python and SDK matches yours. Okay, तो इसको भी ये सब मैंने बोल दिया है। तो पहले हम लोग रनर, फिर रन स्ट्रीम, फिर रन सिंक, और इस तरह से ये पढ़ेंगे। ओके
Then we will move on to the next topics. क्या ये काफ़ी है? Give me food examples. I am using um, light LLM with Open AI SDK. Agent SDK using Google Gemini API key. Well, comment the code and easily understandable. Okay, I guess this this will be good. जो मैंने prompt लिखा है काफ़ी दिल से बना के लिखा हुआ है, so I will be sharing this. अच्छा है, स्टडी मोड में अब ये ऑनलाइन सर्च कर रहा है क्योंकि मैंने इसको प्रॉम्प्ट में बताया है. क्राफ्टिंग एक्सप्लेनेशंस एक चीज़, दूसरी चीज़ स्टडी स्टडी नेवर स्टॉप वाला इसका मूड ऑन हो गया है. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हालात कैसे हैं. ओके, एजेंट्स कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड. आई डोंट नो कि वाई काम नहीं कर रहा. हम इसको रन करते हैं. कोई भी मॉड्यूल इसको ऐसा नहीं मिला एजेंट्स. ओहो, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट इसमें रन करना था. डॉट इन भी इंस्टॉल नहीं हुआ. मैं सिर्फ पाइडेंटिक को करता हूँ और अब डॉट इन भी को करता हूँ. आई डोंट नो कि क्या हो रहा है. ये वर्चुअल इन्वायरमेंट भी एक्टिवेटेड है. पिप इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट एसडीके सब. अरे वहाँ से कॉपी कर लेते हैं. ओके, तो ये हमें सिखा रहा है बट उससे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. ओके, ये ऑलरेडी है लेकिन एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं.
पाइथन डैश एम इंस्टॉल। ओके, पाइथन डैश एम करके देखते हैं। ओके, ये भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ओके, मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं अगर देखा जाए तो, डॉट इन भी वगैरह सब है, लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। Your VN is clearly active and packages installed. If you are still getting the module not found error, one of these is happening. You are running code with a different Python that is one or where Python on Windows. Both should point inside your Win folder if the editor ID is using if your Python is using system Python instead, it won't see these packages. Packages name is match. ओके, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम अब यहाँ पे ही हम इंपोर्ट करके देखते हैं। इंपोर्ट डॉट इनवी। यही से हम करेंगे फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट रनर। देखते हैं हमारे पास अगर ये आ गया तो फिर इस डॉट इनवी के अंदर ये पैकेजेस मौजूद हैं। अगर नहीं तो फिर हम पाइथन का वर्जन चेक करेंगे। हो जाओ सिम सिम। रनर आ गया, इसका मतलब कुछ मसला तो नहीं है ना। अरे, ये तो हो गया। लेट मी जस्ट डू वन थिंग। ये ना मैं यहाँ पे सारा पेस्ट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसका मतलब है कि सेम सेम स्क्रिप्ट चल ही नहीं रही। ये तो अजीब बात हो जाएगी। लेट मी चेक। मैं दोबारा से रन करता हूँ उसको। मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर ही आ रहा है मेरे पास तो। ओके, लेट्स रन इट डायरेक्टली। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, एजेंट डॉट डैश 00.5। मैं इतना ही कर लूँगा। नो नीड मॉड्यूल। ओके, क्या हम गलत फोल्डर में हैं? पाइथन को नहीं मिला ये एजेंट डैश 00.5। ओके, मैं कहाँ जाऊँ करंटली? मैं ओपन ए आई डैश एस डी के डैश 00 में तो हूँ। ओके, कॉपी पाथ कर लिया मैंने। यही तो है डायरेक्टली। ये कहीं पे भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? पाइथन पाई नो मॉड्यूल डॉट इन। इसको डॉट इन भी नहीं मिल रहा वहाँ पे। यूवी प्रोजेक्ट डॉट टोमल की फाइल नहीं है। मैं तो एक काम कर लेता हूँ सबसे पहले।
13.11 मैंने 13.13 इंस्टॉल किया था कुछ दिनों पहले, अभी इस पे शिफ्ट हो गया मैं। यहाँ से मैं पाइथन का वो कैसे बदलूँ? यहाँ से बदलता है ना? Two different Python installs, which you also used earlier in the type to 11. That's why you install a list to work there. But when you run Python 13.13 interpreter, it doesn't see the env package or your package structure. That's why you keep modular activate the env created. ये तो स्पेसिफाई नहीं है कि हमारा डॉट वी एन वी है, तो चैट जीपीटी बस यही बता रहा है। Control Shift P, type Python interpreter, you will see defective Python in. ठीक है, तो हम पुराना वाला यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी पाइथन। पाइथन 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 create environment, install new Python file, show यहाँ पे कुछ था। ये रहा, करंटली हमारा जो डॉट वी एन वी है वो ये है। ओके, तो इसी पे बना हुआ है, और हमारा जो पाइथन है वो ग्लोबल ये रहा। अच्छा जी, अब हमने सेलेक्ट कर लिया है अपना पाइथन का पुराना वर्जन। नाउ लेट्स सी। हो सच अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँ रन करने का, ट्राई एजेंट डैश 00.py, ओके, तो ये रन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ट्राई करूँ यहाँ में कंट्रोल शिफ्ट पी,
मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट का सेलेक्ट कर लिया वहाँ पे। देखते हैं अगर वो चल रहा है। आई गेस चल रहा है ये। अब कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट्स पे भी कोई इशू नहीं है। हाँ, हमारे पास रिस्पांस आ गया है। ओके, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली ये वाला तो काम कर गया। एंड जो थोड़ा बहुत इशू था वो सॉल्व हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ पाइथन वर्जनिंग। और हमारा जो इंटरप्रेटर था अगर हम देखें, सो वी वर हैविंग दिस प्रॉब्लम यहाँ पे। अगर हम पाइथन इंटरप्रेटर पे क्लिक करें तो मैंने अभी ये वाला सेलेक्ट किया है, पाइथन 11 पॉइंट सॉरी 3.11.6, जिस पे डॉट वी एन वी बनी हुई है मेरी, तो मैंने इसी को सेलेक्ट किया है। सो इसी में काम कर रहा हूँ मैं। बाकी आप लोग भी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी लिख कर पाइथन सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर की टैब में आकर यहाँ से अगर आपके पास मुख्तलिफ पाइथन वर्जन्स हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास करंटली ये दो हैं क्योंकि मुझे कुछ काम करना था, तो मैंने दो इंस्टॉल किए थे। तो मेरा डॉट ई एन वी जो था वो बन गया था 3.11.6 में, और मेरा जो पाइथन वर्जन था वो ग्लोबल में चला रहा था, दैट्स वाई। ओके, अगर मैं इवन ये वाला ऑन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर से होगा, है ना। और फिर अगर मैं रन करूँ, सो दिस विल प्रोबेबली गिव मी एरर। हाँ, कह रहा है कि इसको कुछ भी नहीं मिला, तो ये एरर देगा। अगेन कंट्रोल शिफ्ट पी। अगर मैं यहाँ पे दोबारा आ जाऊँ और अब मैं यही सेलेक्ट करूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही, सो देन आई एम गुड टू गो। अगर मैं रन करूँ तो मेरे पास ये जो एजेंट है ये रन हो जाएगा। सो अ कॉमन प्रॉब्लम, और उसका सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। दैट्स गुड, अच्छा लगा मुझे सॉल्व करके, मज़ा आया। अब स्ट्रीमिंग वगैरह पढ़ लेते हैं, जो कि हमने इंटरेस्टिंग एक टॉपिक कुक करके रखा था पीछे। तो उसकी तरफ चलेंगे। बाकी ये जो करंट फाइल है ये चल गई है और इसके रिस्पॉन्सेज वगैरह आ गए हैं। आई एम ट्रांसफरिंग टू दिस टू द मैथ एजेंट। आई एम डिज़ाइन टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ओनली प्रोवाइड स्पेसिफिक दिस ओके। चलें, अब जो है हम लोग आते हैं एक जगह पे। तो मैं चेक कर लूँ इफ़ समवन इज़ जस्ट कमेंटिंग, तो मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ साथ में। सॉरी, मैं कमेंट्स नहीं दिख पा रहा। लेट मी जस्ट पॉज इट राइट हियर। ओके, लेट्स सी। Raleigh Carter, learning background. Quick question: Are you do? What are you doing? What are the resources you use to learn something new? I use majorly ChatGPT and just go off to the internet randomly to study stuff. Like their own documentations, and yeah, that's the major resources. But ChatGPT is kind of the centralized tool to fetch you the data. So that's why I use ChatGPT, the online search tool. Soon I'll be trying out Perplexity AI too, because I have heard that it fetches you live results and stuff. And my learning background is that I have learned TypeScript and I am a web developer actually. But currently trying to learn the Open AI Agent SDK, just learned building up agents, and I have little knowledge of Python. So yeah, trying to figure out stuff by myself. ओके, सो ये हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर गया है। नाउ वी आर गोइंग टू create our agent finally. That's a happy thing. Now the thing is that I have to just import all the important modules. यहाँ पर मैं input output guardrail guardrails tool handoff. Okay, we need this one. And यहाँ पे जो भी हमारे पास imports हैं, मतलब import OS and import async IO and agent से हमें ये सारी चीज़ें चाहिए. So I will be doing this in the next tab.
यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने जो नई फाइल बनाई है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस वाले को बंद कर देते हैं। ओहो, इसको क्लोज कैसे करूँ? ओके, यहाँ से क्लोज करते हैं। सो import OS, then we got import sync IO, and then we got from agents import मेरे पास ऑटो कंप्लीशन कहाँ से आ गया? आई डोंट नो, लिटरली नो आइडिया। मेरे पास यहाँ पे रनर आ जाएगा, फिर मेरे पास एजेंट आ जाएगा, फिर मेरे पास मेरे ख्याल से मुझे एजेंट चाहिए, मुझे रनर चाहिए, मुझे एजेंट चाहिए, और मुझे और कुछ चाहिए क्या? फंक्शन टूल्स, इनपुट आउटपुट गार्ड रेल्स वगैरह। नो, आई डो नॉट नीड एनीथिंग एल्स आई गेस। क्या मुझे 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 और कुछ चाहिए? हाँ, मुझे एक चीज़ और चाहिए। आई नीड फ्रॉम डॉट env import load dot env, एंड इसको लोड कर देते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है पाइडेंटिक का यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ आवर बेसिक सेटअप फॉर नाउ, because I do not need the input and output guardrails because we are learning streaming. So yeah, this will be it. तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये टैब खोलते हैं, and in the terminal I will just exit the Python environment, exit cls, and I guess I do not need this window, so I will just kill the terminal. Now as of the prompt जहाँ पे हमने लिखा था, okay, so what is it? Streaming is where the agent SDK really start to feel live. Okay, uh, quick check. What level should I aim for? Beginner, comfortable with Python, async? Either way, I will walk you step by step with minimal jargon, and we will write it to light LLM plus Gemini so it matches your stack. Okay, thank you. What's the three runner methods actually do? Okay, three runner methods हैं हमारे पास. Let me check. Okay, three runner methods हैं हमारे पास. All three starts a workflow loop. Call the agent, maybe call tools, maybe handoff, stop when there's a final output. The difference is how you call and what you get back. So runner.run, a sync method returns a run result when done. Use inside a sync definition or frameworks like Fast API. Runner.run sync wrapper around .run. For script slash CLI, no event loop running. Okay, I do not know what event loop is. Returns the same run result. Okay, तो ये दोनों run result return करते हैं, but ये जो हमारे पास run sync है around dot run wrapper. Okay, देखते हैं इसको. Runner dot run streamed async with streaming returns a run result streaming. Iterate result dot stream event, and to receive semantic events, partial tokens, tools start, finish, handoffs as they happen.
receive semantic events. Iterate result not stream event, receive semantic event, partial tokens, tool start, finish, end of as thing happen. Okay, सब कुछ live हो रहा होगा. Okay, doc overview and context. Agent SDK home plus guiding streaming guide. Install and wire up. Light LLM Gemini OpenAI compatible. We'll make Agent SDK talk to Light LLM OpenAI compatible and Light LLM will forward to Gemini. Install. Pip install -u OpenAI agents Light LLM fast API Vicron python.env. ओके ये सब हमारे पास तो है लेकिन फास्ट एपीआई मेरे ख्याल से नहीं है. सो agent SDK reads OpenAI key on import will still set a dummy. It's fine with light LLM. Start light LLM proxy targeting Gemini API. One of CLI quickest. It is still using 1.5 Pro. We are using 2.0 Flash. So this is an old version. Do not believe in ChatGPT. And what do we got? Map route, nice when using multiple models. Light LLMs within OpenAI compatible endpoint. We will point the SDK client and this. ओके सो एक एजेंट बनाया है इसने मिनिमल एजेंट वी विल रीयूज़ बार बार इसको ही यूज़ करेंगे शायद हम. और रियल वर्ल्ड सिनेरियोस का क्या है? योर हेल्प डेस्क रिसीव्स लॉन्ग ईमेल्स, द एजेंट समराइजेस एंड टैग्स अर्जेंसी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे पहले हमें क्या चाहिए? डॉट इन वी लोड डॉट इन वी आ गया, ओ एस आ गया, फ्रॉम एजेंट्स रनर आ गया, ओपन ए आई चैट कंप्लीशन मॉडल ये यूज़ कर रहा है. और फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट ओपन ए आई सेट डिफ़ॉल्ट ओपन ए आई क्लाइंट. ओके इसने लाइट एल एल एम का यूज़ नहीं किया बट ओपन ए आई चैट कंप्लीशन मॉडल इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड. सो या नो कंप्लेंट्स. दे हैव टू सेट द मॉडल लाइक दिस मैनुअली. तो हम ये भी सीख लेते हैं, कोई बात नहीं. if you use route.yaml name, otherwise Gemini / Gemini 1.5 Pro, and set default client OpenAI client works with OpenAI compatible providers. Global all agent use this client unless overridden. Okay. And client is equal to async OpenAI API key.os से ले ली है ये.
base URL is this one. Okay. So what I'm going to do is that to read the rest, support summarizer agent name is equal to support summarizer, model is equal to model instruction. You are a support triage assistant. Summarize the email in 2 to 3 sentences, then add tags like urgent, billing, bug, question as appropriate. Okay. So output type is equal to string. ओके तो हमारे पास आउटपुट टाइप भी आ गई, वो स्ट्रिंग में ही आएगी, जस्ट रीजनिंग है, बट वी कैन यूज़ pydantic schemas for more structured output. We will reuse this from other files. Okay, runner जो है वो कहीं और से आ रहा है, so yeah. Run sync, simplest CLI script blocking. Use when you just want a one-off result, cron job, or script CLI returns a result with dot output. From agents, common import runner, support summarizer. If name is equal to main, email is equal to this. Hi, team, my voice for July double charge. Also, your latest update crashes when I try to export PDF. Can fix it. I need a refund today. Okay. Synchronous wrapper, safe for plain scripts. So here we have result is equal to runner.run sync. Agent is equal to support summarizer, and the input is this email. Print is equal to final output and result dot output. Okay, that was simple. What happened under the hood? Same workflow loop as async, just wrapped it. Just wrapped it would fail if you already had an event loop. Run async endpoint fast API use in web backend. You await it and still get a result with dot output. Cron fast API, import fast API, body from agents, common import runner, support summarizer. App is equal to fast API, app.post summarize. Okay. String is equal to await dot run. So what do we need actually is that this one. Stream await runner dot run, and okay, this is getting quite boring and I want to run away literally, but we will start building actually. This will keep us engaged.
Mhm. Mhm. Okay. I guess I should play this live. Okay, let's start building, I guess. First, we will do one thing to set up our model. Light LLM params. We do not need this. In order to run this, I guess we have already our configuration done. So I will just pick it up, move it to the side, and run on this file. Okay, I have got this. Now I have to import one more thing, and that is from agents dot model dot light LLM import light LLM। मेरे ख्याल से ऐसा ही था कि अगर हम देखें from agents dot extensions dot models dot light LLM import light LLM। okay, this is quite long, but we will learn it again। models dot extensions extensions dot I don't like the autocomplete, literally this is getting on my nerves। extensions models dot light LLM score model। but I guess I have made a mistake here from agents dot extensions। Now it's good। okay, I will just delete the original one। I had to just recall what importing looks like। Then we are going to do one more thing, and that is to just define a model। so model is equal to light LLM model, and inside here we had to define the name of the model। so if I look here, it is model, it is Gemini। so yeah, I can name it Gemini model and API key। तो यहाँ पे मैं इसको जो है डजेंट मैटर जो भी नाम दे, बट जेमिनाई मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मॉडल इज इक्वल टू Gemini slash Gemini dash 2.0 flash। we are using this one।
तो मुझे शायद इसको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। एंड द API की is equal to os.get env. We have Gemini API key. Okay, now we have defined the model. The next step is that to create an agent. So for that we are going to create an agent, and इसने जो स्टेप हमें बताया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, ये वाला OpenAI chat completion model, but instead we use this setting. This is quite efficient and just little to configure. You do not need to just set up a separate file for the configuration of the agent. Okay, the next step is that we create an agent and give it a name and define the model, which is already the Gemini one, and give it some instructions. So yeah, I'm going to create an agent and it will be support summarizer is equal to agent, and here we have the agent's name. It will be support summarizer, and then we will have the model of the agent. Model will be Gemini, which we have defined. Instructions is equal to you are a smart RAG agent. Okay, we will just copy the instructions because instructions are just up to us. What do we prefer? We will make it a doc string. So yeah, it is now multi-lined. We will make it more Pythonic by just formatting it a little. Looks good. Okay, and now we are going to define the output type of this agent. तो यहाँ पे इसकी output type जो होगी, output type is equal to str, and then we will have runner is equal to runner and call this function. Okay, but inside the runner we are going to run this agent and pass in the instructions, not the agent instructions but a user input actually. So currently the next step is just to identify what is run sync, simple CLI script blocking when you just want one-off result. Returns a run result object that we or a class that we just destructure to get our output. And from here, go runner, support summarizer. Okay, this is the file example sync.py. Okay, so I have to create another file for the sync just to get the examples. I will create a folder. First, that will be runners, and then slash sync
example sync.py. Okay, now inside the runner folder we have this file, and in the sync.py, example sync.py, we have to import the agent common and runner and support summarizer. But I don't think so. I have put this into a file. Its name is actually streaming.py. So yeah, I will be importing from streaming. Import runner, and then we will import support summarizer. Okay, I hope this will work. We have imported these two. Now we have just to run this common setup. We have our email is equal to docstring, and we have to put in this email. This email is related to a bug and someone is reporting it to the team. The next step is just to create synchronous wrapper safe for plain scripts. So result is equal to runner dot run underscore sync, and inside this we have our agent that is equal to the support summarizer, and then we have our input field, so that will be equal to the email that we just created above. Okay, then we have to print the results. So print, we will get our final output first. I guess equal was right. We can just try anything. It's just for the format. Final output. Okay. So the next we will just print the shift alternate down arrow, and we will do our result dot output, not final output but output. Do we have an output? We have final output. Let's just check if the output works, then we can work it around. Backslash n, backslash n, backslash n, slash n. Okay, let's just run this one. Exit. And run this file. Okay, it is not recognizing the import. Streaming from agents common, so I have to change the name simply.
It can be a reserved word. Agent streaming. Okay. The name has been changed automatically. So yeah, now it will not sound like some custom made package, but rather a module. Let's read the error. क्या है ये? No module name agent stream. Oh, I know why. It's because this is inside a file. So we have to get out of this file first. So how do we navigate in Python? Okay. Let's just ask GPT. I have created a, yeah, sorry. How do I import in a folder from outside? From tool, import some function. ओके सो हम डायरेक्टली करते हैं इसको ऐसे. ओके it does not require anything special. It is already correct. From agent streaming, import runner and support summarizer. Oh, I do not have to run this file. I actually have to run this one. I guess. Okay. Or no. I have to run this agent streaming.
I import this and this. It will have runner and support summarizer. Do we have any problems with this file? I will just run it like I runners slash example save. It still couldn't find this module. Okay, so what do I have to do? It was not working in a folder, but rather in the root directory. So yeah, I have to move this one out. But one more thing, if I just create a file, the file will be, where did it went actually? So if I just come here and .py, will this become a module? I don't know. Let's just do this. Oh, no, no, not this one. This one. Okay. They have double underscores. So I should also just do that. Do I have a double underscore? I have.
Mine is still not a package. But anyway, we will just continue with this one. We are just learning not SDK but the Python syntaxes. I have a long road ahead. Okay, let me just try this one now. I need a user input to pass into this function, and that is here. Then we have the agent, so we just pass the support summarizer. What is it saying? It got the unexpected argument agent. Let me see, how does it run? Okay, so what I have to do, stat to remove this and this. Now everything shall work. Okay, must work, actually should work. Let's go. I guess I solved it. It is taking more time than usual. Okay, and the output, I knew it already, so it is going to be result.final output. ChatGPT is just misleading us by the old version. I'm not going to use the study method again. It still requires improvement. Yes, so we got this. This customer is reporting a double charge on their July invoice and crashing issue with the latest app update. When reporting PTF, they are requesting an immediate refund, urgent billing bug. Okay, great. So we got the result. Now that we have got the result, now we have stuff sorted out. We are going to continue with the example, but not what the ChatGPT has written. We are going with our own custom code, the modified one. ChatGPT is obviously not a good resource to learn from currently. If you are just using an offline version of ChatGPT, but the browse tools can help a lot. Async endpoint, fast API. I did not ask for the fast API version, but I would rather use this one. But I guess I should try this one. It will be fun. Just need to install the fast API first. UV pip install fast API. Okay. We have got the fast API. Now we can continue to code.
Now we are going to create another file, and it will be example async api.py. Inside here, we are going to import UVcron, and from fast API, we are going to import fast API, and the body for the request body. Then we are going to import from agents. We did not sign for the agent streaming because my file name is agent streaming, so I'll be importing from that. Runner support summarizer. Okay, so I got the support summarizer, and I have to just make them small from now we have to just use the app is equal to fast API and initiate the function, and sounds like express.js. Now we have to initiate the decorator, so app dot post, and we have to send a post request to the slash summarize path, and we have an async definition summarize. Inside the summarize we have an email, and str is equal to body. Inside the body we are using a spread operator and embed is equal to true. Okay, I don't know what this syntax means, but I will surely look into this after the running. So run result is equal to await runner dot run. Inside the run we will have our agent support summarizer and email. We are not going to follow the syntax of the ChatGPT. I guess this one is also going to be problematic for us. And fast API has been around for a while, so I don't think so this is going to be problematic, but looks like a legacy code. Return us with a summary, that is summary. It will be a dictionary, and inside the dictionary we have run
result dot output. Okay, but we will have a final output actually, not this one. Dot final output. And now if the name is equal to this, UV corn actually, I was pronouncing it UV corn dot run app host is equal to, we have to define the host, and can it be local host, and the port should be 3000. Okay, typical real life use, you would call this from your ticketing UI right after an email arrives. Store a summary plus tag in your DB for agent to route /SLAs. Okay, so this is a mini application that will help us just to summarize our emails by passing the request body of the user to our API endpoint with the agent inside. So yeah, that's quite a small program. Let's run this one and see our results. I don't think so it is going to be running here. It requires probably some inputs which already has, but let's see. We are going to get a port. Let's just copy the port actually. 127.0.0.1. Now let's try again. Let's see if it works. Hmm. Okay, not allowed /summarize. We cannot access this route. Okay, let's leave it. Okay, this is not our current topic, so we are going to just go with the run streamed. Stream partial events.
Okay, so this is a failure email, I guess, and this is also urgent. So streamed is equal to await. We're going to finish this runner dot run streamed and support summarizer, and we have the email. Then we are going for the async for event in stream dot stream event, and then we have to print streamed output, but we will have to just see, because event dot type, I don't think so type is applicable to this one. And in the end I will have, we can just, you know, and then we are going to print and print again stream dot final output. Okay, I just ran this through. And runner from agents cannot import name runner from agents. Let's see. Oh, we did not run this function. Please run. Okay, what is it? We are going to continue the stream later because the battery is dying. Bye bye. Sorry.